It's 5 o'clock, and I'm sure that I'm audible. Okay, so without wasting even a single second, let's proceed further and talk about today's important discussion. Today, we are going to talk about two important things. Okay, let me mute the mic of those people. Okay. First of all, we are going to discuss and we are going to talk about two important plays. The first one is definitely the King Lear and Othello, tragedies by William Shakespeare. Moreover, we are going to talk about, in today's session, inshallah, the literary devices that we were supposed to complete yesterday, but we could not. But in today's session, we are going to complete the section of literary devices plus idioms. So without wasting even a single second, let's proceed further and let's talk about the section first. Moreover, yesterday in the lecture, I requested you to prepare your favorite genre or favorite writer. And in case you are done with that, we will definitely have a look on that activity. Right now, I'm assuming the screen is there, the whiteboard is there, and everything is visible. Participants, before talking about the questions, I want to talk about two important things. The first thing is about idiom, and second thing is literary devices. Although it's not possible that it's not possible for any person to memorize all the idioms that are available in the universe, because English is on yearly basis taking a lot many new words. So it's not possible for any person to memorize all the idioms and literary devices. But you need to memorize at least those idioms that have been the part of previous interviews. So we will discuss these idioms in today's session. Now, talking about the first section, that is, we're going to talk about the previous questions from Othello. I'm pasting these questions on the whiteboard in a second, and here we go. Okay, I'm sure the questions are visible now. In case you want to take the screenshot, you may go on. The first question is, who calls Othello the most romantic character of all of Shakespeare's heroes? So do you know the answer of this question? A very interesting and a very famous question. So the question is, ओथेलो को रोमांटिक हीरो कौन कहता है हिस्ट्री में? आई एम श्योर कि आपने हिस्ट्री को पढ़ा और आप इस स्ट्रक्चर को जानते होंगे. एक बड़ी फेमस जो है वो इसके ऊपर हमारे पास बुक है, तो आपने इसकी डिटेल्स को यकीनन देखा होगा. सो हीरो, इन केस आपको आइडिया नहीं है, यू मेंशन नो इन द चैट बॉक्स so that मुझे पता चले कि आपको इसका आइडिया नहीं है और हम without wasting even a single second हम proceed कर देते हैं. Otherwise I'm waiting for the answers. देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है ये व्यूज हैं एसी बेर्डले के. इसी बेर्डले एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा नाम है कि जब हम ओथेलो के बारे में या किंग लियर के बारे में, हैमलेट के बारे में या मैकबेथ का नाम लेते हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसको पता है. इसी बेर्डले जो है वो ओथेलो को मोस्ट रोमांटिक कैरेक्टर कहता है. वो समझता है कि अगर विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई स्टोरीज में से कोई ढंग का हीरो है, कोई प्रोटैगनिस्ट है, तो वो हमारे पास जो है यही पर्सन. और इसकी क्या वजह है, उसको ऐसा क्यों लगता है? इसी बेर्डले जो है 1904 ऑफ द वेरी बुक इज द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. सजाद, मुझे एक सेकंड में इसे फिक्स करता हूँ. मैं भी इसे फिक्स कर लेता हूँ ताकि बड़ा ये इशू हो ना आपके लिए.
कर रहे थे एसी ब्रेडली के बारे में। हम ये बात कर रहे थे कि एसी ब्रेडली जो है वो क्या कहता है। आई एम श्योर कि अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है, इट्स फाइन नाउ। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह से बेहतरीन हीरो है। सो हु कॉल्स, इसका तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल गया कि एसी ब्रेडली जो है वो ही कॉल्स कि ये हमारे पास जो है जो हीरो है ये सबसे अच्छा हीरो है। एसी ब्रेडली ने ये जो किताब लिखी थी द ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के नाम से, इसको लगता था कि ओथेलो जो है वो मोस्ट रोमांटिक फिगर है शेक्सपियर के हीरो में। उसकी वजह ये है कि ये हमारी दुनिया से नहीं है। बड़ी डर की क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर एसी ब्रेडली के। इस काम को लेके बहुत से राइटर्स ने बाद में एस्केलेशन की तरफ गए, इसको एस्केलेट किया। ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देयर ब्राइट चांसेस दैट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। एसी ब्रेडली ने वो समझता था कि ओथेलो सबसे यूनिक कैरेक्टर है, मासूम कैरेक्टर है। ब्रेडले को लगता था कि ओथेलो जो है वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसके अंदर बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स हैं। वो जिस पे एतमाद करता है बहुत गहरा करता है, वो जिससे मोहब्बत करता है बड़ा पैशनेट है, और उसको ये महसूस होता है कि वो नोबल पर्सन है। सो शेक्सपियर की अदर हीरोज जो हैं, जो जितने बाकी हीरोज हैं, उसको ये लगता है कि उन तमाम हीरोज को सीखना चाहिए ओथेलो से, क्योंकि ओथेलो हमारे पास एक ऐसा इंसान है कि वो ये चाहता है कि वो पैशनेट रहे, वो ये चाहता है कि वो बड़ा नोबल है। ब्रैडली को ये भी लगता है कि ओथेलो की जो पोइटिक क्वालिटीज हैं वो बहुत यूनिक हैं, जो और वो इशारा करता है ओथेलो की शादी की तरफ, न्यूनेस ऑफ हिज मैरिज। उसको लगता है कि ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर किसी की नई नई शादी हो तो जेलसी का एलिमेंट तो होता है। यागो के जितने भी तरीकेकार होते हैं इस सारे के सारे प्रोसेस में, सारे के सारे प्ले में, क्रिटिक्स उनको भी स्पेस देते हैं। व्हाट इज द इशू विद द वॉइस शफकत? व्हाट इज द इशू एग्जैक्टली? क्या इशू है आवाज के साथ? जो वॉइस इज नॉट क्लियर, डिस्टॉर्शन है या इशू क्या है आपके पास? क्यों क्लियर नहीं है? ओके, चलें, ठीक है। Sometimes it's echoing as well. Okay. फट के आ रही है, ठीक है। Okay, so participant, I'm assuming it's fine now. So अभी तो जो है हमने सब कुछ से चेंज कर दिया है। Is it fine? Now it's better. So resuming back, यहाँ से हम जो हैं, but I need a confirmation कि ये बेहतर है अभी जो है। Okay, okay. अच्छा, सो अयागो और इसके बारे में ब्रेडली को ये बिलीव है, ब्रेडली को ये लगता है कि ओथेलो जो है कभी भी किसी भी तरह की जो है वो एडमिरेशन की तरफ नहीं जाता है। एडमिरेशन से मुराद यहाँ पे क्या है? ब्रेडली को ये लगता है कि जो ओथेलो के अंदर एक ही चीज सेंटर में है और वो है ओथेलो के अंदर मोहब्बत, और वो मोहब्बत बड़ी टूट के करता है। और यही वजह है कि टी.एस. इलियट जैसे बड़े-बड़े राइटर्स ने बाद में आने के बाद जो है वो ओथेलो को कहा था कि ओथेलो जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि सेल्फ ड्रामेटाइजेशन का शिकार है। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन को जरूर देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। इसकी लास्ट स्पीच की तरफ देखिएगा कि वो अपने आप को चीयर करने की कोशिश करता है, वो रियलिटी से भागने की कोशिश करता है। टी.एस. इलियट को लगता था कि इसकी जो स्पीच है वो टेरिबल एक्सपोजर है ह्यूमन वीकनेस का। सो मुख्तलिफ राइटर्स के मुख्तलिफ व्यूज हैं, बट एसी ब्रेडली ने इसको रोमांटिक कैरेक्टर इसलिए कहा बिकॉज ही वाज ऑफ द व्यू that he is having the best qualities that we can expect with the hero. Second question is, stories impressed Desdemona. What sort of stories they were exactly? Well, Desdemona was impressed and she used to hear the stories of Othello.
Definitely, the stories were the stories of adventures. When we try to answer the second question, we need to understand women, generally speaking, across the universe. It is a general phenomena. They are more inclined towards the armed forces. They are interested in those people who fight for their country in different battles. It is even you can see the same as in Pakistan, maybe. If I talk about the population size that I have with me. So Desdemona, and that is the beauty of William Shakespeare. The themes, the character, the approach of William Shakespeare is universal approach. Whatever he is talking about, you can locate those themes everywhere. Like if you talk about any country, you can definitely go on and you can find William Shakespeare's themes are available there. Desdemona. Desdemona actually entered in the personality of Othello. We can also say that Othello had captivated Desdemona, and Othello used to tell Desdemona the stories. Because it's damn true reality that Othello's experience in foreign countries, he had seen the vast wilderness, he had seen a lot many romantic caravans, he had seen the mountains, so everything. So the stories, the question, the main part of the question is stories. The stories were the stories of adventures. Othello used to tell the stories that how he fought in different countries. So the stories of the adventures were there that impressed Desdemona. That is the possible answer of second question. Talking about the next question, that is the question number 3. In Othello's tragedy, Othello is blameless. So when we say blameless, why Bradley thinks he is innocent character? Participants, remember one thing. Whenever someone is asking you a question about the Shakespearean tragedies, so Shakespearean tragedies, what do you understand when I say the Shakespearean tragedies? What comes in your mind when we talk about Shakespearean tragedies? Shakespearean tragedy is basically, yes, remember one thing. When someone is talking about Shakespearean tragedy, you need to mention, or you may ask the questioner, Shakespearean tragedy means the book written by E.C. Bradley. Okay, Andrew Cecil Bradley was the person who wrote this book, and this book is very important book. If we talk about A.C. Bradley is a great name. Basically, the book, The Shakespearean Tragedy, the complete title of this book is Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. But the book is very important. So my recommendations are, because A.C. Bradley is very important literary critic, you should go for that. The next question is about Othello, and Othello is blameless. Participants, when we say blameless, it's not easy to say, it's not easy to call a person that he is blameless. How he is blameless? What are the reasons? How you're going to justify your answer? Merely calling Othello blameless is not going to answer this question.
A.C. Bradley, as I mentioned earlier, he is of the view that Othello is a person who is having positive characteristics. Numan has contributed something. Can we say that Othello remained all the while in wars, having no practical experience of life? That's why he is really entrapped by Iago. He is blameless. Yes, you may go on, Numan. That's perfectly good argument for Bradley, because the last portion of the question is talking about why Bradley thinks he is innocent character. They are not asking for your point of view. Rather, they want to take the point of view of A.C. Bradley. Bradley presented Othello as a character who's blameless because, as I've already mentioned while I was answering the first question, that Othello is most romantic figure. A.C. Bradley thinks that Othello is the person who is not interested in treacherous activities, who is not going for evil. So he is the person who is in intense love with Desdemona. And when Iago is playing successfully, rather when Iago had played successfully, he perceived a different view of Desdemona. So whatever he perceived about Desdemona since their marriage, now they're worried about, no, he's worried about like what, in which direction he is going to think about. My recommendation is, while you are going to prove the innocence of Othello, you can take maximum references from A.C. Bradley, but if you want to criticize, because in your interview, you can take either side of the question. Either you may go with A.C. Bradley's view, or you can take your own position. So in case you want to go with the other writer, that is T.S. Eliot. T.S. Eliot did not share the same ideas with A.C. Bradley. So you can negate the very statement. Maybe Othello is focusing more and more on the statements of Iago because somewhere in his heart he is not sincere. So there are a number of analyses. Even the critics, they have analyzed the language of Othello. They talked about Othello's language, his poetic tune, and all the things. And there is a very important research article written by William Ampson, E-M-P-S-O-N, Ampson. Okay, William Ampson's, and the very title of the research paper is Honest in Othello. So a very important and complex words. Culmination is there. The culmination of important words is there. So try to learn how you are going to interpret different meanings from a simple statement. So yes, if you are going to talk about that A.C. Bradley, yes, he is right while he is labeling Othello as a blameless character, you may go on, and then you need to read and write something from the great Shakespearean tragedies. In fact, the actual title is the Shakespearean Tragedies, Lecture on Macbeth, Hamlet, Othello, and King Lear. The last question is important characters, Iago, Desdemona, and Othello. You're requested to Google the details about these characters. Iago, a very important character. Even the character of Iago is not only important because he's there in Othello, he is important in a lot many ways. Though he is a fictional character, but he is the main antagonist. Iago is that character. He is the husband of Emilia, you know, but Iago is proceeding further with different moves. So if we talk about the heinous character, the villain is the Iago. But Iago is a fascinating character. Iago is something who is giving you motivation.
whatever you want to do, go for it, and you are definitely going to complete that particular act. So you may take some references from Iago's characters. There are a lot many quotations available. So you need to explore the details of Iago, Desdemona, and Othello, because these are the main name characters that you need to go on. The next portion, the next bunch of questions, they are from King Lear. Okay. Let me paste the questions from King Lear. Okay. So here we go with King Lear. Okay. King Lear is based on a myth. Is it true? What is the possible answer of the first question? Do you really think whenever we talk about King Lear के मतलब basic चीजें तो आप सबको आती हैं, पता है आपको कि कहानी है 3 बेटियों की और क्या होता है, कैसे होता है, गॉनरिल क्या करती है, कॉर्डेलिया क्या करती है, सारी सिचुएशंस आपको पता है. इसके अंदर सब प्लॉट का भी पता है कि एक जो मेन प्लॉट चल रहा है, एक जो दूसरा प्लॉट चल रहा है. सो बट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं. So the first question is, King Lear is based on a myth. Is it true? क्या ये सच है कि किंग लियर जो है वो एक मिथ के ऊपर है? आपको क्या लगता है? Yes, no. I'm waiting for the answers. You just need to give the answer. और आप इसका जो है वो आंसर आसानी से जो भी आपको लगता है आप दे सकते हैं. Yes. But in your interview, the simple yes is not going to work. Yes, it is true that King Lear is a great tragedy by William Shakespeare, and it is based on a myth. The name of myth is Lear of Britain, but this time the spelling are different. It's not L-E-A-R, it's L-E-I-R, Lear of Britain. So, in fact, Lear of Britain. Okay, Lear of Britain. King Lear, remember one thing, whenever you're going to talk about King Lear, you need to mention how King Lear is devoid of political insight. Why King Lear is authorizing the daughters to proceed further, because even he is alive. So the Lear of Britain is the name of the myth, coming back to the exact answer of the question. And Lear, once again, Lear was a legendary king, a great king of the Britain. And this story, it's not the case that William Shakespeare is narrating this story for the very first time. जिस तरह से हमारे पास हीर रांझा की स्टोरी है जो 1766 में जो है हमारे पास वारिस शाह ने लिखी थी ना, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पता होगा. मल्लिका हंस राज के पॉइंट पे उसने जो है वो बताई थी. ऐसा नहीं है कि वारिस शाह के हीर रांझा से पहले जो है वो किसी ने स्टोरी को बताया नहीं था. 5-6 लोग लिख चुके थे, लेकिन जो किस्मत जिसके हिस्से में आई, जिसकी ज्यादा फेमस हुई, वो वारिस शाह की थी और आज लोग सिर्फ उसी को जानते हैं. ऐसा नहीं था कि किंग लेयर पे इससे पहले लोगों ने लिखा नहीं था. हमारे पास जेफरी ऑफ मॉनमथ है, MONMOUTH, जेफरी ऑफ मॉनमथ ने इसके ऊपर लिखा. 12th सेंचुरी में बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया. लेकिन जो शोहरत विलियम शेक्सपियर में आई, अगरचे उसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया. विलियम शेक्सपियर चीजों को मॉडिफाई किया करता था. व्हेन ही वाज राइटिंग इन द एज ऑफ जेम्स द फर्स्ट, तो वो उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेता था.
जब वो क्वीन एलिजाबेथ के रेन के अंदर लिखता था उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेता था. So yes, it is based on a myth, and you are supposed to explore the details of the Lear of Britain in case you want to get a detailed inside it when you are going to defend your myth. तो ये myth कैसी myth होगी? The next question, very easy question. Mention any 5 quotation from King Lear. अगरचे आप इसको मेमोराइज ही करेंगे, आपको कोई भी इसकी कोटेशन याद है कहीं से देखे बगैर, आप उसको जरा मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स में. कोई ऐसी कोटेशन है जो आपको याद है इसकी? Nothing will come out of nothing. Remember a very famous quotation. Speak again. और जो आपने अपनी बीए में पढ़ी थी quotation, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their spots. Oh yes, Shafqat. As flies to wanton boys are we to gods, they kill us for their spots. The prince of darkness is a gentleman. A lot many other quotation. Who is it that can tell me who I am? So speak what we feel, not what we ought to say. King Lear से बड़ी जबरदस्त quotations हैं, 5 याद कर लीजिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, justice is no more available in this world. Wow, what a fantastic question. Is it true in the context of King Lear? क्या लगता है आपको? ये वाकई में justice is available in this world? True or not true? It is an opinion-based question. Remember, in your interview, you are supposed to answer some questions जो कि opinion-based होंगे. So आपको क्या लगता है? Yes, no, justice is available in this world. Is it true in the context of King Lear? Participants, remember. लंदन के ग्लोब थिएटर के अंदर आज भी जब किंग लियर परफॉर्म किया जाता है ना, लोग अश्कबार होते हैं, रोते हैं. बड़ा ब्रूटल प्ले है जिसमें इंसानों की शिकस्ता दिली को, इंसानों की नफरतों को या उनके मास्क के बगैर चेहरे को दिखाया जाता है. किंग लेयर के जितने भी किरदार हैं वो बड़े बेमानी से हैं, मीनिंगलेस से हैं, घटिया से हैं. ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मुझे लगता है कि मीनिंगलेस से मुराद ये नहीं कि विलियम शेक्सपियर उन्हें ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया. मीनिंगलेस इसलिए कि जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे कैरेक्टर्स किरदारों के चेहरों से मास्क उतरता चला जाता है, हमें ये जस्टिस नामी लफ्ज से यकीन उठता चला जाता है. हमें ये लगता है कि ये दुनिया जिसका हम हिस्सा हैं ये शायद लाताल्लुकी पे बेस करती है. यहाँ पे शायद किसी को किसी से कंसर्न नहीं है, इंसानियत के दुश्मन यहाँ पे मौजूद हैं. और ये मैं नहीं कहता. वंस अगेन, अगर आप अपने इंटरव्यू में कोई बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इंडिफरेंस जो है वो वहां पे है, यू नीड टू टेक सम रेफरेंसेस, और वो कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस होने चाहिए. मैं वही फेमस कोटेशन को दोबारा कोट करूंगा, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, they kill us for this watch. So really it is the game, it is the case, the characters उन्हें ये लगता है कि we are like flies, they are killing us for this watch. और ग्लॉस्टर्स जो हैं, ग्लॉस्टर्स को देखिए, ग्लॉस्टर्स जो जिसका प्लॉट पैरेलल काम कर रहा होता है सारे के सारा, एडगर के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो देखिए. सो हमें ये पता चलता है कि ये सारी की सारी प्ले के अंदर हमारे पास एक ही चीज मुत्तफिक है, एक ही चीज जो है उसको सबात है, और वो है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी. जो अच्छे लोग हैं उनको मरना होता है, बुरे लोग हैं उनको मरना होता है. अगर हम उस इमेज को जरा सोचें, जिन लोगों ने किंग लियर को पढ़ रखा है, जब किंग लियर का खातिमा होता है, बड़ा दर्दनाक वो इमेज है कि लियर जो है और कॉर्डिलिया जो है वो दोनों के दोनों जो है वो मर जाते हैं, एंड पे मरते हैं.
सो गुडनेस के जो करेक्टर्स हैं वो हमारे पास दो ही करेक्टर्स हैं। शायद कॉर्डिला का करेक्टर हमारे पास जो है वो एक करेक्टर ऐसा है जो कि गुडनेस के ऊपर बात कर रहा है, और गुडनेस इस दुनिया से खत्म होती और जो अच्छे जो थोड़ी सी गलती करते हैं उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है मैडनेस की सूरत में, डेथ की सूरत में, आंखों के जाने की सूरत में, अंधा होना पड़ता है। और हम शायद ये कभी नहीं बता सकते कि ये दुनिया इंसाफ पे मबनी लोगों के लिए है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किंग लेयर, यस इट इज ट्रू that justice is no more available in the world, and the very statement that substantiate my answer is, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for this spot. So ये इसका possible answer हो सकता है। The next question is, do you believe that self-evaluation, एहतसाब को कहते हैं, आप समझते हैं इसको, and lack of knowledge can be painful and lead to a tragedy? Once again, ये जो खुद ही को जान लेना होता है ना, खुद को समझ लेना होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप को समझना, अपने आप के ऊपर बात करना, और बाज मौकों पे जहाँ पे आप गलत हों, आप खुद को तस्लीम करते हैं कि हाँ मैं गलत हूँ और यहाँ पे मुझे शायद समझने की जरूरत है कि मुझे यहाँ पे अपनी गलती को तस्लीम करने की जरूरत है। किंग लियर हमारे पास एक ऐसा मासूम करैक्टर है जिसने सेल्फ इवैल्यूएशन से शायद वो नहीं गुजरा था, जिसको शायद ये इल्म नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। सो डू यू बिलीव, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किंग लियर एक ऐसा करैक्टर है जिसके मोहब्बत में डूबने की वजह से, जिसके इल्म की कमी की वजह से उसकी आने वाली जो थोड़ी सी जिंदगी है वो क्योटिक है, वो ट्रेजेडी है, ट्रेजिक बन जाती है। हमारे पास जब हम कोशिश करते हैं किसी चीज को समझने की, तो हमें ये देखने की जरूरत है, किंग लियर की जो बेटियां हैं, जो रेगन है, हमारे पास बहुत से क्रिटिक्स ने इसको कोट किया और हम भी कोट करेंगे। रेगन इसकी इब्तदाई जो ड्रामा के सीन में होते हैं ना, वो ये समझती है कि उनका जो बाप है किंग लियर जो है, उसको सेल्फ नॉलेज नहीं है। लियर अचीव सेल्फ नॉलेज बट एट द कॉस्ट ऑफ हिज वेल्थ एट द एंड ऑफ द प्ले। जब सब कुछ चला जाता है तब उसको सेल्फ नॉलेज जो है वो समझ में आता है, सेल्फ इवैल्यूएशन वो फिर उसकी करता है, और फिर वो ये कहता है आई एम वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। सो किंग लियर को सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इवैल्यूएशन जो है उसको तब मिलता है जब वो सब कुछ खो देता है। सो यस आई बिलीव दैट सेल्फ नॉलेज एंड द लैक ऑफ नॉलेज, self evaluation can lead you towards tragedy, and it is very true in the case of King Lear, because King Lear, once he suffered from all the tragedies, once he's gone through the tragedy, then he realizes that it's not the Regan, it's not the other daughter, but it's Cordelia that loves him. So अब उसके लिए ये बात और तकलीफ दे होती है। अब और दूसरी जो पैरेलल प्लॉट है हमारे पास, अब वहां पे देखिए एडमंड स्टोरी दैट इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ नॉलेज इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। हमारे पास जो है, जो ये स्टोरी है, ये जो प्ले है किंग लेयर का, ये जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ वंडरफुल क्लेमिनेशन है, ये बताती है कि यस, लेक ऑफ नॉलेज इज द ओनली थिंग कि जिसकी वजह से किंग लेयर की सारी ट्रेजेडी जो है वो होती है, अदरवाइज किंग लेयर की शायद ट्रेजेडी होती ही ना। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जब किंग लियर को पढ़ेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट और कुछ इंतहाई जो मुश्किल क्वेश्चंस थे उनको तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन किंग लियर के मतलब कुछ और बेसिक डिटेल्स भी आपने याद करनी है। किंग लियर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, और इसको तकरीबन सबने पर रखा होता है। और अगर आपको किंग लियर से क्वेश्चंस आते हैं, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि किंग लियर जो है इसमें आप सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मेजर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, किंग लियर का क्या रोल है, कॉर्डेलिया, एडमंड, गॉनविल, रेगन, ग्लॉस्टर, ये सब के सब क्या कैरेक्टर्स हैं। आपको विलियम शेक्सपियर के तमाम प्लेस की सेटिंग का पता होना चाहिए कि क्या ये एंशिएंट ब्रिटेन के अंदर सेट किया जाता है, क्या ये डेनमार्क के अंदर है, क्या ये किसी और कंट्री के अंदर है, ठीक है।
सो इन सेटिंग्स का भी आपको ढंग से आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू और टून को जरूर देख के चाहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुराद है कि आप ये देखिए कि ये किस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में है। पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये है कि ये जो करेक्टर्स हैं जब हम उसकी बात करते हैं, आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन जो है, इसको जो है वो देख के जाइएगा। और दूसरा ये भी देखिएगा कि क्या किंग लियर के अंदर भी कोई सोलिलोक्यू है, क्या किंग लियर के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है, और इस प्ले की टोन क्या है। ठीक है, और जब हम टोन कहेंगे तो क्या इसके अंदर आपको बिटरनेस मिलती है, आपको इसके अंदर होप मिलती है, नहीं मिलती है, आप इसके अंदर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हैं, या आप इसके अंदर जो है वो होप को नहीं देखते हैं। सो आपको क्या लगता है जब कॉर्डिलिया जो है वो मर जाती है आखिर पे, जब किंग लियर बचाने की कोशिश करता है, तो क्या होप है? तो इन तमाम चीजों को एक दफा जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके जी, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इडियम्स। हम दो ही प्लेस करेंगे क्योंकि इडियम्स और लिटरेरी डिवाइसेस के लिए टाइम नहीं बचता। ओथेलो का ये प्ले है। इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू मे गो ऑन। The second, the drama is of King Lear, and the questions are there on the screen. In case you want to take the screenshot, you may go on. And the third section is that we're going to discuss is the section of the idioms. So here we go with the idioms. Okay, participants, I'm going to share the 10 idioms with you today. So इनका जो है वो जरूर नोट कर लीजिएगा। इनको आसान से idioms हैं। इन द doldrums जो हैं, आप समझते हैं कि doldrums के meanings क्या होते हैं? Sir, please talk about Hamlet. Yeah, I'm going to talk about Hamlet as well, but then I will not be able to talk about idioms and literary devices. So आप जैसे कहते हैं, majority से पूछ लेते हैं, should I proceed further with the idioms and the literary devices, or should I talk about Hamlet? जैसे पूछ रहे थे आप, जैसे कहते हैं मुझे, बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है और ये सेक्शन काफी देर से निगलेक्ट हो रहा था। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, शुड आई प्रोसीड फर्दर विद द इडियम्स, और मुझे हेमलेट के जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहिए। इडियम्स का एक वोट आ गया इमरान हैदर साहब का, और बाकियों के वोट्स हैं वो बराबर हो गए। हेमलेट टुमारो, हेमलेट टुमारो, हेमलेट टुमारो। सर बोथ इडियम्स, हमारे पास इडियम्स के वोट ज्यादा हो गए हैं इमरान सर, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो है वो उन्होंने विन कर लिया है। सो वी आर गोइंग बैक टू द इडियम सेक्शंस। सो आपके वोट कम हो गए हैं। नो, इडियम्स जो हैं वो हमारे पास पेस्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे, बिकॉज ये हमें जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो अभी काम कर रहे होते हैं, तो अभी ये मुझे लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इडियम्स और लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो आई एम नॉट एबल टू पेस्ट देम। ओके जी, इन द डोल्ड्रम्स हैं, और इसके बाद एट क्रॉस पर्पसेस हैं। The third idiom is yes, to bear bunch of है when the pigs will fly. The fourth idiom, the fifth is to fight shy of है. The sixth idiom is very easy idiom, to rob Peter to pay Paul is very easy idiom. Then there is a playing to the gallery. And the next one is that I'm sure that you have read a lot about this idiom, when you are holding or offering an olive branch to someone. At number 9, we have in
blue font, and the last idiom is set one's cap down at heel. So how many idioms you guys think they are on your fingertips? So from these 10 idioms, rate yourself. कितने idioms आपको आते हैं जो अभी आपको बगैर preparation के आप इनको आंसर कर सकते हो? In case you are given this the chance, तो इनमें से कितने idioms पे आप बात कर सकते हो? जरा लिख सकते हैं आप, नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 कि मैं इतने idioms पे बात कर सकता हूँ. How many idioms are there? इमरान हैदर साहब. अच्छा जी. गुलाम मुस्तफ़ा साहब को लगता है कि अभी शफकत 4 पे हैं. ओके, सो मैक्सिमम देखते हैं हमारे पास के पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें मैक्सिमम भी आते हैं. इतने इम्पोर्टेंट है इमरान साहब. ओके, सो मूविंग ऑन, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. आप अगर चाहें तो इन ईडियम्स के नोट्स बनाने के बाद अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं. डेफिनेटली हमारे पास जो हैं लिटरेरी डिवाइसेस को भी ढंग से एक्सप्लेन आप जो खुद ही करेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ हुई, आई एम हियर, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. एब्सर्ड थिएटर ऑफ द एब्सर्ड थिएटर, नॉट ऑफ द एब्सर्ड थिएटर के बारे में आपको पता होना चाहिए. बड़ी इजी सा जो ये कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा हमारे पास जो है एक हमारे पास होता है एक्सेंट, वो वाला जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक एक्सेंट हमारे पास लिटरेरी डिवाइस में भी होता है. इनकी डिटेल्स को देख लीजिएगा. हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास जो है वो एक्रोनिम है. एक्रोनिम को देख लीजिएगा. एक्रोनिम आपके पास जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस में भी फॉल करता है, लेकिन ये है लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में सही है. लिटरेरी डिवाइसेस में भी जब ये इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे भी इसका मीनिंग यही होता है कि क्वाइंट वर्ड जो होता है, जो कुछ नया देता है. देन यू गो ऑन एंड टॉक अबाउट एक्शन. हम जो हैं वो अल्फाबेटिकल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. आज हमने जो है वो कोशिश करेंगे कि कैटेगरी ए में से जो आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जो है वो देखें. ये 10 हो, 15 हो या 20 हो, आपको आज इनके ऊपर काम करना होगा. और कल जो है वो इसी तरह से हम अल्फाबेटिकली मूव ऑन करेंगे. एडेज है आपके पास, और ये वही हैं जिनके ऊपर जो है काफ़ी वर्कआउट करके देखा गया, और इनको दोबारा से भी एक दफ़ा मैच किया कि हमारे पास प्रीवियस इंटरव्यूज में ही रहे. अभी हम वो भी इनके साथ साथ ऐड करेंगे जो कि आपको, हमें लगता है कि ये भी प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी एस्थेटिक डिस्टेंस. नंबर 7 पे आपके पास जो है, अच्छा इससे ना एक और चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, आपके साथ जो है वो लिस्ट भी शेयर कर दी जाएगी. नोबेल प्राइज जो हैं जिन लोगों ने विन किया था, तो ऑन डेली बेसिस यू आर सपोज टू प्रिपेयर एटलीस्ट 5 नोबेल लॉरेट्स. ठीक है. अगर कोई लिस्ट शेयर कर दे तो दैट विल बी रियली अ ग्रेट फेवर, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है. एक इसकी लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, और दूसरा जो है वो हमारे पास पोइट लॉरेट जो हैं उनकी लिस्ट शेयर कर दीजिएगा. ये ब्रिटेनिका पे अवेलेबल है. मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा अगर आपको ये ना मिल सके शाम तक, तो मैं आपको भेज दूंगा. सो ये हमारे पास जो हैं. नहीं जी, हमें सिर्फ लिटरेचर की दुनिया की बात करनी है इमरान हैदर साहब. We're not going to talk about the rest of the people. We just need those people जिन्होंने लिटरेचर में विन किया था. ठीक है, हमें सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करनी है. ओके जी, नंबर 7 पे हमारे पास है जी एलेगरी है, और नेक्स्ट नंबर 8 पे हमारे पास जो है वो एलिट्रेशन है. नेक्स्ट हमारे पास जो है जी एल्यूजन है. अब आपको सांस आना शुरू हो गया क्योंकि आसान से आना शुरू हो गए हैं. मुझे लगता है कि शुरू से तो आप परेशान हो गए होंगे कि ये कौन से वाले जो लिटरेरी डिवाइसेस आना शुरू हो गए हैं. नंबर 10 पे हमारे पास जो है वो एम्बिग्विटी है. नंबर 11 पे हमारे पास जो है एनाक्रोनिज्म है. नंबर 12 पे हमारे पास एनाग्राम है. देन हमारे पास जो है वो एनोलॉजी है.
मूविंग ऑन, हमारे पास जो है वो ठीक है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी सम मोमेंट। या एनआरके, एंड द लास्ट वन इज जो हमें समझना है वो है जी आपके पास एफोरिज्म। सो दीज 15 लिटरेरी डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बात कर रहे हैं और आपको इनको ढंग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एक दो और हैं, मेरी वैसे रिकमेंडेशन है कि फ्रेंच एक वर्ड है एवेंट क्रिएट, इसको देख लीजिएगा। अब मैं कुछ वो बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं और इस दफ़ा के इंटरव्यू में आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा कर दें। ओके, एवेंट क्रिएट है और ऑटोबायोग्राफी को देख के जाइएगा। इसके अलावा आप जो हैं बेसिक सी चीज़ें हैं, ऑडियंस वगैरह को तो ज़रूर देखेंगे। नंबर 18 पे हमारे पास जो है वो एजोनेंस है, इसको देख के जाएंगे आप जो हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है आर्ग्यूमेंट है, एंड देन जो है वो आपके पास या दस इनफ। हमारे पास यही जो है वो 19 है। ये वाली जो चार हैं ये मेरी रिकमेंडेशन पे हैं, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। और बाकी जो हैं दे बिन द पार्ट ऑफ द प्रीवियस इंटरव्यूज, और ये हमने उनको जो है वो लिया है। ठीक है जी। सो इनको तैयार करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप इनकी नोट्स बनाएंगे ऑन डेली बेसिस। इनके नोट्स जो हैं वो बना के वन लाइनर्स बनाएंगे, इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं बना लेंगे कि जिनको आप रिवाइज ही नहीं कर सकें। ठीक है, इनको जो है वो शॉर्ट शॉर्ट से नोट्स जो हैं वो होने चाहिए। Okay, what is we have a question, what will be the difference between pun and ambiguity? What is the difference in fact? अच्छा, ambiguity देखिए हमारे पास जो है जिस तरह से हम ये कह लीजिए कि जब ambiguity एक ऐसी सिचुएशन का नाम होता है, पन तो एक पहले ambiguity से पहले पन को समझ लीजिए। अब हम जो है वो एक जैसे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड प्ले है पन बेसिकली ना, जिसके जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स जो है वो बना सकता है। ठीक है, जिस तरह से जब हम जो हैं वो होमोनिम्स की बात करते हैं, होमोफोन्स की बात करते हैं, ठीक है, होमोग्राफ की बात करते हैं। और एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि जब हम इंटेंशनल यूज करते हैं होमोफोनिक का, होमोग्राफी का और दूसरी फिगरेटिव लैंग्वेज का। ठीक है, पन जो है वो डेलिब्रेट होता है, इंटेंशनल प्ले ऑन वर्ड्स होता है। ठीक है, एम्बिग्विटी जो है वो अकर हो सकती है बात करते हुए किसी भी टेक्स्ट के दौरान जो है वो। ठीक है, जब मुझे डेलिबरेटली किसी चीज पे इंटेंशनली अपने वर्ड्स को यूज करना है तो वो पन होगा। ठीक है, और जब जो है वो हम बात करते करते हमारे पास जो है वो किसी भी टेक्स्ट के दौरान जो है कोई भी चीज जो है अकर हो जाती है तो वो हमारे पास एम्बिग्विटी होगी। ठीक है, सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन शायद पेस्ट कर दिया इसके साथ, पोलिसेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स से हमें यही समझ में आता है कि जिसका मतलब होता है जो मीनिंग्स के साथ कंसर्न है, ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। और जब पोली है तो इसका मतलब वही है हैविंग मैनी मीनिंग्स। सो सिंपली आप जब पोलिसेमेंटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब एक आपके पास वर्ड है उसके सेवरल मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो पोलिसेमेंटिक होगा। आप अगर इसकी जो है वो पूछना चाहते हैं। Oh yes, yes, yes. Oh yes. Okay, all right, all right. I'm sorry. I thought that शायद ये आपका जो है वो कोई क्वेश्चन है। Okay, participants know talking about the Hamlet because हम जो हैं वो दोनों एक्टिविटीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। So no proceeding further. अब हम Hamlet की बात कर लेते हैं। The last section because we have 11 minutes more with us. Hamlet. Participants, the very first question. Let's talk about Hamlet और Hamlet के बारे में जो पहला क्वेश्चन है, very easy question in fact. So complete title, what is the complete name of this
tragedy. So do you know the complete name of this tragedy? A very easy question. That is the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. सो एक तो हेमलेट को तैयार करते हुए आपने कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो याद रखनी है। दैट इज कि शेक्सपियर का ये प्ले जो है ये परफॉर्म कब हुआ था, रिटन कब किया गया था। एक इंटरव्यू में तो एक ये भी क्वेश्चन आया था, अगर से ऐसे क्वेश्चंस हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन इसका जो है वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है जो कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती है। सो इसके अंदर जो है वो कितने वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन क्वेश्चन नहीं है, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिस्ट पूछते नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रैशनली पॉसिबल कि आप किसी को भी जो है वो कुछ भी वर्ड्स को काउंट कर सकें। बट फिर भी जो है वो 25,000 से ज्यादा इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि शायद ये 30,000 से कम है, ये मुमकिन है 28,000 हो या 29,000 हो, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स हैं एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था। बट 30,000 से कम है, मुमकिन है 29,000 पर प्लस हो, बट रफ एस्टिमेशन आर कि ये 25,000 से ज्यादा है। इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है। इसकी सेटिंग से मुतल्लिका जो है क्वेश्चंस वो इसके मुतालिक क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि शायद हम उनको पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते हैं कि इसमें से ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस रहे हैं मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि इन चीज़ों को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसकी सेटिंग्स को जो है वो आपने देखना है, और आपने ये देखना है कि ये जो है हमारे पास इसके अंदर एक करैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो करैक्टर है क्लॉडियस का करैक्टर जो है वो। ठीक है, क्लॉडियस का जो हमारे पास करैक्टर है, इसको ज़रा डिटेल से जो है वो आपने एक्सप्लोर करना है, और हैमलेट का उसकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी देखिएगा। अच्छा, जितने भी लिटरेचर एग्जिस्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के अलावा भी जिन लोगों ने लिखा, हैमलेट उनमें से एक ऐसा प्ले है जिसके मुतालिक ये समझा जाता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इसकी वजह शोहरत ये थी कि जब विलियम शेक्सपियर लिख रहा था, काम कर रहा था, उसने जैसे ही हैमलेट पे काम मुकम्मल किया, उसी वक्त इसकी जो परफॉर्मेंस जैसे जैसे हुई, लोग इसको धड़ाधड़ देखने आते थे। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने परफॉर्म करवाना शुरू की, जिसमें हमारे पास जो है वो रॉयल शेक्सपियर कंपनी जो है वो सर फहरिस्त है। हमारे पास जहाँ पे बाकी चीजें भी इसकी इम्पोर्टेंट है, हमारे पास कुछ इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है कि जब हैमलेट लिखा गया था उस वक्त जो है वो टेन्योर क्या था। कैथलिक जो है वो पूरी ताकत में थे या प्रोटेस्टेंट पूरी ताकत में थे, तो वो घूस जो है वो बातें जो करता है अपनी लास्ट राइट्स के बारे में कि मुझे जो है ढंग से जो है ना तो बुरियल जो है वो दिया गया, ना मुझे जो है वो ढंग से मेरे साथ सलूक किया गया, मुझे रिवेंज चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो आपने इसकी सेटिंग के साथ साथ ये भी देखना है कि इसके अंदर क्या हमारे पास रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस का ऑप्शन मौजूद है। क्या जब हम इसको हैमलेट को पढ़ते हैं तो रिलीजियसली जो चीजें मूव कर रही थी, तो रिलीजियसली चीजें जो हैं वो इंटरप्रिटेशंस हम इसकी कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आपने हैमलेट के बारे में, अगर हम डिटेल से चीजों को पढ़ते हैं तो हैमलेट के इंसेनिटी के ऊपर बहुत बात होती है। हर इंटरव्यू में बहुत ढंग से जो है वो चीजें जो है वो बताई जाती हैं कि कौन कौन सी इंसेनिटी के ऊपर, इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं। इंसेनिटी में इसके पास जो है मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने लिखा, मुख्तलिफ तरह से लिखा उसको। कुछ लोगों ने ये लिखा कि जो हैमलेट की सेनिटी है वो ड्रामेटाइजेशन के पैरामीटर्स पे पूरा उतरती है। कुछ ने लिखा कि नहीं, ये इसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। सो उस टेन्योर के अंदर जितनी भी चीजें थी, जो पॉपुलर चीजें थी, क्या उनमें हमारे पास हैमलेट की मैडनेस जो है या इसकी जो इंसेनिटी है, क्या उन पूरा पैरामीटर्स को पूरा करती है। दूसरा जो है इसकी सोलिलक्यू के बारे में क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है। सोलिलक्यू को इनको देख के जाइएगा। इसकी लैंग्वेज के बारे में आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है वो कोर्टली लैंग्वेज है। तो जो कोर्टली लैंग्वेज होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं, आपको उनको एलिब्रेट करना आना चाहिए कि कोर्टली लैंग्वेज जो है वो किस तरह से प्रोसीड फर्दर करते हैं। हाँ, अगली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यही था कि ये कुछ क्रिटिक्स इसको समझते हैं कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। आर्टिस्टिक फेलियर से क्या मुराद है कि हैमलेट जो है वो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स के अंदर जा रहा है। वो इतना ज्यादा सोच रहा है कि बल्कि जर्मन जो क्रिटिक्स हैं उनको लगता है कि ये तो कुछ ऐसा करैक्टर है कि जो शायद खातून है,
कोई फीमेल है, ठीक है। सो एक ऐसा करेक्टर कि जिसमें जो फीमेल है, यार मैं क्यों माइंड करूंगा इमरान, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिस्टिक फेलियर जो है वो बेसिकली टीएस इलियट ने कहा था, ठीक है। आर्टिस्टिक फेलियर होता क्या है वैसे इमरान, आर्टिस्टिक फेलियर क्या होता है? एक आर्टिस्टिक जो है, जब हम कहते हैं कोई आर्टिस्टिक फेलियर है, वो क्या होता है? उसको ये लगता था कि हमारे पास जो है, जब आप अपनी इमोशंस को बयान नहीं कर सकते हो ढंग से, ठीक है, जब आप जो हैं जब जब हम ये कहते हैं ना कि आर्टिस्टिक फेलियर है, उसका मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस के साथ डिटेल में जा रहे हैं। आर्टिस्टिक फेलियर का मतलब ये है कि हैमलेट जो है वो उसके अंदर जो है वो इमोशंस को वो अपनी को एक्सट्रीम लाइन में लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। वो एक ऐसा पर्सन है जो रीजंस के ऊपर फोकस करता है लेकिन इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर करता चला जाता है। और इसकी जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिस्टिक फेलियर को मुख्तलिफ हम तरह से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो ये एक ट्रेजिक हीरो है, लेकिन ट्रेजिक हीरो जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हाई रैंक का होता है, वो तो इसके अंदर है, लेकिन इतना ब्रेव होता है कि वो सोचता चला जाए। इट्स नॉट द थिंग। तो इसीलिए तो इसके मतलब ये लोगों ने लिखा भी है चैट बॉक्स में कि हैमलेट जो है, हैमलेट इज द मोनालिसा ऑफ द लिटरेचर। एक ऐसा लिटरेचर के अंदर काम है जो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो काम कोई आर्ट का नहीं है, ठीक है। दैट इज द मोनालिसा। मोनालिसा को समझते हैं आप? मोनालिसा क्या है? मोनालिसा के मुतालिक है आपको आइडिया? मोनालिसा जो है वो एक पेंटिंग थी, ठीक है, पेंटिंग है, वो बड़ी फेमस जो है वो पेंटिंग है। तो ये हैमलेट को वो ये कहता है, इलियट कहता है कि ये आर्ट के अंदर जो है, लिटरेचर के अंदर जो है एक मोनालिसा है, बट कि ये जो इंटरेस्टिंग नहीं है ठीक है जी। सो इसके अलावा जो है हम अगर आगे बात कर लें तो हैमलेट के इम्पोर्टेंट जो हैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चंस रहे हैं। इसके अलावा जो है हैमलेट में जो और कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया गया वो ये है कि जो इसकी पहली कोटेशन है व्हाट इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इसको जरूर देखिएगा। सो क्या है रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क जो है, और हैमलेट जो है उसके लिए क्या अहमियत रखती है घूस की स्पीच जो है वो, ठीक है। एक तो रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इसको देखिएगा, और जो घूस की स्पीच है ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं हैमलेट के मुतल्लिका जो हैं वो, और हैमलेट के मुतल्लिक ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनको आपने जो है वो ढंग से देखिएगा जी जी। ये जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट स्पीच हैं जो लिए गए हैं, उसके जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ एक्ट्स में से आए हैं। यस, मार्शल्स की जो स्पीच है एक्ट 1 और सीन 4 में से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नुमान आपने ठीक आइडेंटिफाई किया, ये एक्ट 1 सीन 4 से ली गई स्पीच है इसकी जो है वो। सो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जी, इनको आप प्रिपेयर करेंगे, एंड इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। सो होप टू सी ऑल ऑफ यू टिल टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेव डिगर्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेजिए चैट बॉक्स में। वी आर डन विद द टाइम इमरान, एक्चुअली आई हैव अनदर सेशन एज वेल। तो इसीलिए हमारी क्लास ठीक पूरे टाइम पे शुरू होती है, 5 बजे से 1 मिनट पहले शुरू हो जाती है। हम टाइमिंग की बड़ी स्ट्रिक्टली पाबंदी करते हैं, और फिर अगली क्लास भी पूरे टाइम पे जो है वो शुरू होनी होती है। So till then, take care of yourself. Hope to see all of you tomorrow. Khuda Hafiz.